Good afternoon. Today we will discuss about how to prepare project. Another report is there. It is from. Madam, just a minute, madam. I am Dr. Panikray speaking. Hello. Tapaswini madam, ଆଜ୍ଞା sir. I am Dr. Panikray କହୁଥିଲି. ଆଜ୍ଞା sir ନମସ୍କାର. What is my request to you? I am calling you 2 3 times. You are not picking the phone. Another, you kindly join the class on time, ma'am. Every day you are joining on 4:15. Okay sir. You tell us, then you will change the timing. If you are busy somewhere, then you will make it 4:15. Okay sir. Either you join on 4 o'clock. If you are busy, then you will make it scheduled for 4:15. And Okay I am sir. calling you 2 3 times. You are not picking the phone also. Okay, go ahead, ma'am. Don't feel otherwise. But you are given the timing 4 means you have to join by 4 o'clock. Every day you are joining 4:15. Okay. Go ahead, ma'am. Okay. Today we will study how to prepare another project such as preventions of nutritional diseases. First of all, we prepare one abstract. Then abstract the importance of nutrition in the prevention of disease has been. You have to prepare one abstract about the gist of the project. The frontiers of science have brought forth two understandings of the links between early undernutrition and later development of lifestyle related disease, challenging the nutrition scientist and practitioner to evaluate practice to better support health throughout the life course. Then we have to prepare one abstract about the uh, nutritional prevention of nutritional diseases. Okay, how to prevent the community nutritional diseases such as at the time of pregnancy, in early child, in childhood deficiencies. Then for a lactating mother, what are the deficiencies seen? Then you have to also prepare one project related to all kinds of communicable diseases or who are belonging to vulnerable group. Then further research continues on the significance of subsequent nutritional practices as critical times in growth and development. Underpinning this understanding is the role of genetic background on nutritional requirement and effect of nutrients of food. You have to write in the abstract in a short form what is the importance of nutrition in consuming food in a way that matches and support human health. You have to write one abstract. Then you go for the introduction. What is the introductions of importance of nutrition? What is the importance of nutrition in the prevention of chronic disease such as preventable diseases are or controllable diseases are one is diabetic, then hypertension, asthma, or asthma cases. These are the controllable diseases. Also, you have to mention here what is the importance of nutrition in these chronic diseases or communicable diseases. Then background of the study. Nutrition are important factor in the promotion and maintenance of good health throughout the entire life process. Then background of the studies, you have to mention what is the background of nutrition, how importance is the nutrition with their lifestyle management in the promotion and maintenance of good health throughout the entire life course. Their role as determinants in well established and they therefore occupy a prominent position in prevention of activities. In the background of the studies, you have to write importance of nutrition into how to maintain good health. Then as well as you have to write what are the preventable measures and how the nutrients prevents all kinds of these communicable diseases. माने न्यूट्रिशन टा केमिति कम्युनिकेबल डिजीजेस को केमिति कंट्रोल करूची आ तर इंपोर्टेंस कोन सेटा बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज टा गोटे कलेक्शन करिवो. It has been calculated that 2001 prevention diseases contributed approximately 60% of the 56.5 million total reported death in the world and approximately
You have also find out the prevalences of these communicable diseases, prevalences or ratios of the disease. Then scope of work. The scope always refers to the purview of the prevention of nutritional diseases. It is also become prudent in the part of the researcher to delineate the counter of the study, because it will make the study more pinpointed preventions and nutritional diseases. Then scope of the work is scope of the work, the prevention of nutritional diseases. It is depend on the researcher. तो research उपरे researcher उपरे depend करे the scope of work, माने केमती से जिनसटा को ये करूचन काउंटर करूचन केमती से ताकू केस स्टडी रे की क्वेश्चनर मेथड्स की एनी अदर मेथड्स. The scope of work is totally dependent on the researcher. Then aims and objective of the study. Then what are the aims and objective of the studies? The paper intend to understand the outcomes observed on social and economic fronts of the women members being involved in SHG's activities. So here the researcher will take the help of the SHG's activities. SHG's activities, women who are involved in SHG's activities, and the paper intended to understand the outcome observed on social and economic fronts of the women working in the SHG activities. It is a aims re nation SHG's women who are involved in SHG activities. In order to achieve the stated objectives, the following research questions are advanced. Know the socio-demographic features of the sample respondent, record the food and nutrient intake of the respondent, and compare the same with the available recommended dietary allowances. What are our RDA or recommended dietary allowances? Record the food and nutrient intake of the activities कौन कहले मैडम एसएचजी एक्टिविटीज माने कोन एक्टिविटीज रे जो वुमेन्स माने इन्वॉल्व अछंती तो सेमानकु एथि पई कि से रिसर्चर नेले कारण तांको अंडर बहुत सारा लोक थांती जेमती सेडा अंगनवाड़ी को सब सप्लीमेंट्स जाउची तो सेमाने आउ किछि फूड रो जेमती मांडिया एबे मिलेट्स मिशन चलीची तो मिलेट्स रो मध्य किछि प्रोडक्शन करी कि सेमाने मध्य डिस्ट्रीब्यूट करूचंती तेणु करी एई वुमेन्स माने जो माने इन्वॉल्व अछंती एसएचजी एक्टिवेशन रे तो तांकु से नेला परे तांको पाखे बहुत रेकर्ड्स थिबो से माने को मानकु दउछंती आउ से माने जो फूड प्रोडक्ट माने जो फूड जो मार्केट को दउछंती जहा को भी दउछंता पछाडे तांकर लेवल भी रहूची केते कार्बोहाइड्रेट केते प्रोटीन केते कोन तो को मानकु दउछंती तो से मानको थ्रू रु आमे सब रिसर्चर को बहुतडा इन्फॉर्मेशन मिली जिवो हैना सेति पई कि से नेले वुमेन्स हु आर इन्वॉल्व इन एसएचजी एक्टिविटीज जो माने इन्वॉल्व रहउचंती ता माने आमे एठी को बेसी आमे पाई जिबा एडोलेसेंट गर्ल पाइबा आमे लैक्टेटिंग मदर पाइबा प्रेग्नेंट वुमेन पाइबा आउ कहा को पाइबा चिल्ड्रन्स मानको मध्ये आदरु पाई जिबा तो देन ऑब्जर्व द इंपैक्ट ऑफ सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स ऑन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इनटेक ऑफ द रेस्पोंडेंट analyzing the prevalence of nutritional anemia among the respondent तामाने आमे सेठू रेशियोज पाई जिबा about the anemic persons रो रेस्पोंडेंट रे anemic persons मध्ये मिली जिवे कारण जो मानको भी जहा से डिस्ट्रीब्यूशन करूथिबे तादरे खाइला परे तांकर कोन माने बेनिफिट्स हला तो सेति पई कि एनीमिया रो भी आमे हेमोग्लोबिन रो येटा भी पाई जिबा को माने एनीमिक अछंदी फिजिकली भी जानि परिबा प्लस पैरामेडिकल रे भी जानि परिबा एनालिसिस ऑफ करंट आयोडीन स्टेटस अमंग प्रेग्नेंट वुमेन तो सेई थ्रू में एनालिसिस करि परिबा आयोडीन स्टेटस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन जो माने कि माने जो माने कर आयोडीन डेफिशिएंसी रो जो थायराइड हुए तो सेटा भी हमें एनालाइज करि परिबा एनीमिक को एनालाइज करि परिबा आउटे सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स एंड फूड एंड न्यूट्रिएंट इंटेक ऑफ द रेस्पोंडेंट बाकी तक जेते भी रहिले सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स भितरे तो सेमानंकु भी आमे सेठी माने ये करि परिबा आइडेंटिफाई करि परिबा किंतु आमे बेसी एसएचजी ग्रुप एक्टिविटीज मानंकु पाई परिबा एनीमिक अंडरवेट पर्सन बा मालनरिश पर्सन आ रहिला आयोडीन रो डेफिशिएंसी जो माने अछंती तो ए सब हमकु मिली जिवो सहज रे सेति पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रे
जो सिनॉप्सिस हमें करूचु तो सेथरे हमको मिल जिवे. Then adopted approach, review of literature. Review of literature is the major part of the prevention of nutritional disease. The literature available on prevention of nutrition are state level and national level. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मु ऑलरेडी डिस्कस करिछि कि हमकु माने तार हिस्ट्री कलेक्शन करिया को पड़िबो प्लस जो माने ऑलरेडी तापरे रिसर्च करि चरचंती विथ रिजल्ट्स हमें तांकर करिबा सेतरे कोन आसुछि ना रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज द मेजर पार्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीजेस तो एटा मेजर पार्ट एथि पई कि कारण आम न्यूट्रिशन को नहीं कि न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आम जहाँ भी करवा डायटेरी मैनेजमेंट से आमको प्रिवेंशन ऑफ नेशनल डिजीज प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीज रो जो प्रिवेंटिव मेजर्स हमें सब मिलिबो तो सेटा हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर रू पाइबा कारण व्हाट इज फूड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स ए डिजीज में को न्यूट्रिएंट्स दरकार तो ए सब रे हमको मिल जिवो प्लस बुक्स एंड आर्टिकल्स पब्लिक मैगजीन्स सेमिनार पेपर सो ऑन माने जो माने सब ऑलरेडी रिसर्च करिसंती आ तांकर पेपर पब्लिकेशंस हेची बुक्स एंड आर्टिकल्स एक्सेट्रा तो से थ्रू हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर को हमको सब इंफॉर्मेशन मिलिबो देन मेथोडोलॉजी द मेथड एम्प्लॉयड इन दिस स्टडी इज द evaluate and descriptive survey method. The method is suitable because the research work involved data collection from prevention of nutritional disease. The present study will be undertaken in say SHG group रो जो कलेक्शन कले और से धर आपनकर एरिया वाइज आपण करिवे आपण जो जो एरिया रे रहउचंती जोटा के आपनकर बहुत भलो कांटेक्ट रे अछंती तो आपण से एरिया नेबे तबरे ये जे अछंती भुवनेश्वर देन the present study will be undertaken in Bhubaneswar Odisha by adopting a proper sampling method गोटे proper sampling method रे करिसेंती for the conveyance of study voluntary agency and prevention of nutritional disease could be taken as the area of study तो area of studies माने सेटा आपनकर area of studies रे आपण लोक मानकु भलो कांटेक्ट रे थिबा दरकार देन भलो कांटेक्ट रे थिबे प्लस ता सहित आपनकर कोन हबो ना भलो कांटेक्ट रे थिले आ भलो डीलिंग्स थिले तेबे से आपण क्वेश्चनर मेथड हो इंटरव्यू मेथड हो केस स्टडी मेथड हो दे विल एबल टू आंसर इन राइट वेज से माने आपण को ठीक ठीक आंसर देबे तो से एरिया को नै कि आपण करिवे वन वॉलंटरी एजेंसी एंड प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीज देन सैम्पलिंग Second one is sampling. Since the universe is vast and topic of the study is new, the researcher will try to focus on discussion, individual meetings with different prevention disease. The researcher will use random to draw sample from the universe. So sampling mane ame sabu samples collections kariba. Then 3 is data collection. The two sources of data collections are there. One is primary source and second one is secondary source. First हमें primary source रो हमें collection करिबा then we will go for secondary source. Primary source is use simple random method. Researcher will meet each of the respondent and take an interview with them physically. Primary source माने they will ask questions according to their title then in physically गोटे इंटरव्यू भलिया नहीं कि फिजिकली जस्ट नॉर्मल जिनस तांको पचारि कि जो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हुए ता कोंदी प्राइमरी सोर्स दिस कुड बी डन विथ द इंटरव्यू शेड्यूल एंड इट इज आल्सो नोन एज इंटरव्यू शेड्यूल तो सेटा हला प्राइमरी सोर्स देन सेकेंडरी सोर्स हला द रिसर्च विल गो आल्सो गो थ्रू सम ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट रिकॉर्ड्स वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल फॉर द स्टडी The research will also go through some public and private records. Our primary source है direct contact हबो हमरो respondent सहित. It is the direct contact with the respondents. बा जहाँ को नहीं कि हमें vulnerable groups को हो communicable diseases हो जहाँ को भी नहीं करिबा तांको direct interview रे हमें किछि questionnaires करि परिबा कि direct कला परे सेटा हला primary source and secondary sources are the research will also go through some of the public and private records, various government and private medicals for the studies. The public and private records, government और non-government रू भी हमें से थ्रू किसी study ପାଇଁ कि नहीं आनी परिबा तो एटा हला secondary source. Then limitations of the studies.
The major limitations for the studies are the research work is based on the data collected from the secondary data. कारण research work कहाँ पे बेस करिवो? Research work is completely based on the secondary data because it is recorded in a particular way. माने सेटा गोटे हमर डॉक्यूमेंटेशंस जोटा हेथिबो जोटा कि पूरा ओरिजिनल हेथिबो तो हमर रेकॉर्ड्स रे जेमती बर्थ रेट डेथ रेट तांकर बेबी रो वेट मदर्स वेट ए सब जिंस पूरा वैलिड फॉर्म रे थाए. So we will take research, research and a work is based on the data collected through the secondary data. Secondary data रे जो collections हेथिबो सेटा हला valid form. The study finding and recommendation given are based on the limited coverage of the states faraway places. The study findings and recommendation given on the limited coverage of the state faraway places. विभिन्न places रो हमें collection करि परिबा. The facts presented are based on the information provided and discussion held with the stakeholder. तो आमे सेठी informations आमे discussion करिकी आमे तांको पाखरु आनी परिबा. Then poor availability of secondary data sources. जदि हमको रेकॉर्ड रू किछि भी माने गवर्नमेंट हो कि नॉन गवर्नमेंट कि प्राइवेट मेडिकल्स तो सेठू हमको मिलिबाटा सहज होई पारेनी. तो एटा हला लिमिटेशंस. Tools and techniques of the data collection. Actually secondary data सेटा सहजरे मिलिबा कष्ट. To collect the data तापरे डाटा एनालिसिस एंड tabulations. तापरे इंटरव्यू शेड्यूल हला फिजिकल इंटरव्यू रेस्पोंडेड आमे फिजिकल इंटरव्यू नबा सेटा प्राइमरी सोर्सेस रे. देन ऑब्जर्वेशंस I will do in the course of the studies. Observe the whatever you advise to the persons by patients. Then we will observe for some days. Settle observation. Participating approach involved directly or personally. Participating approach is very much necessary. कारण आपण तांको जहाँ भी रेकमेंड करिथिबे तापरे तांको संगे मध्ये पार्टिसिपेट करी तांको सहित ये सहयोग करी कि तांको भी फॉलो करिवे. फॉलो अप रे रहिबे कि एक्चुअली सेटा से माने एतिक जिंस फॉलो करूछंती कि नाही. Then focus group discuss. I will focus with the prevention of nutritional disease. Then focus the group discussion. तो सेटा group discussion to prevent the nutritional disease. तापरे मझरे मझरे जाई के तंग अवेयरनेस कैंप्स जोटा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करी कि तंको ये करे. ए भले चारिटा जिंस हमको डाटा कलेक्शन रे यूज करबा को पड़िबो. इंटरव्यू शेड्यूल माने कोन कोन टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा. एठो हमें डाटा कलेक्शन कलु प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स. तापरे टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर डाटा कलेक्शंस आर गोटे हला इंटरव्यू शेड्यूल्स, देन हला ऑब्जर्वेशन, then participating approach, then focus group discussion, then data analysis and tabulations. The data collected from the study will be tabulated in the master sheet. Data analysis will be done through the statistical techniques like table, graphic, chart and map. To analyze the data, the researcher will use the statistical package for social science. Then data collected from the study in the marksheet. Data analysis records are maintained. Data analysis tabulations are there, and also we will prepare one graphical design also. हमें graphical design भी करिबा. केते जण improve कले, those who are not improved तार ओटे graph design करिबा. तापरे references रे हमें कोन कोठू हमें कहार help रे एटा को करिछु. जेमती some of the books, some of the authors, some of the abstracts, some of the researchers, previous researchers, your guides, समस्त reference रे लिखिबे. WHO according to WHO तांकर किछि ओडा निया हेची. Then prevalences of diabetics the wild रे जणे research करछन तांकर. Then Atlas of Heart Disease and Stroke 2004 तो जेनेभा रो जणे कलेक्शन एंती आपण बहुत सारा जिंस को देखिबे. सेटा हला लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर जोटा सेथरे बहुत सारा ऑथर्स, बहुत सारा रिसर्चर्स, बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट्स आ करंट अफेयर्स एडा सब देखिले आपण सेथु आपण को किछि मिलिबो इन्फॉर्मेशन. एटा रही गला हमरो सिनॉप्सिस. सिनॉप्सिस रे आपण कोन कोन यूज करिवे, what you are using in preparing your synopsis. First you have to write one abstract,
Then you go for small introductions about the topic, then background of the studies, then aims and objectives of the study. What are the aims and objectives? Why we are research on this topic? Aims, what are the aims? Then review of literature is there. In review of literature, methodology is there. We will take sampling method, and in sampling method, then data collection method. Data collection methods are of two types: primary sources and secondary sources. Then what are the tools we are using in research method? Then tools are to interview schedules, observational method, participating approach, and focus group discussion method. Then you have to data analysis tabulations. You should give the tabulated in mark sheet or in graph designing, etc. Then you have to write the references. Then we will start final project work. After approval of synopsis, we will start final project. Then we will write the table of content. Table of content, we should mention the chapter serial numbers, then contents, then page number. We have already discussed in previous classes about the self declaration of the researcher. Then you have to prepare an acknowledgement. Then title. Here the title is prevention of communicable or nutritional diseases. Then introduction. In introduction, you have to write importance of nutrition to prevent all communicable diseases. Then what is preventions? Preventions activities are categorized by three definitions. One is primary prevention, second one is secondary prevention, third one is tertiary preventions. Primary preventions means intervening before health effects occur. Those measures such as vaccinations, altering risky behavior, and banning substances known to be associated with a disease or health conditions. Primary means such as poor eating habits, then tobacco using, etc. Primary preventions. Then banning substances known to associated with the disease or health conditions. We have to advise the persons not to take this kind of to stop poor eating habits such as using tobaccos, chewing pan, taking alcohols, etc. is primary prevention. Then secondary preventions are screening to identify diseases in the earliest stage before the onset of signs and symptoms through measures such as mammography and regular blood pressure testing. So secondary preventions are and regular checking of blood pressure, then blood sugar testing, etc. is secondary prevention to identify the disease in earlier stage. If you will identify the case disease in earlier stage, then treatment and prevention is possible. Then tertiary preventions are managing disease post diagnosis to stop disease progressions through measures such as chemotherapy, rehabilitations, screening for complications, etc. It has tertiary preventions means very last preventions methods where the complications of diseases are more seen, such as cancer patients, AIDS patients. They are preventive measures, whatever preventive measures we are advised to the patients, it is not a fruitful advice. माने आमे हला प्राइमरी प्रिवेंशंस रे आमे किछि तांको कहिबा कि तमे माने ए सब जिंस को बंद कर दे, स्टॉप टेकिंग poor eating habits or stop poor eating habits or chewing pan, tobaccos, etc. Then secondary re
आम सब रेगुलर तांकर चेकअप्स जोड़ा जो हेल्थ चेकअप्स रहे जो थरे कि आम अर्ली डिटेक्शंस ऑफ डिजीज माने डिजीज को माने प्राइमरी स्टेजेस रो जानिबा पई सेकेंडरी प्रिवेंशंस अछि जा फल कि हमरो तांको ट्रीटमेंट को आम स्टार्ट करि परिबा प्रिवेंटेबल मेजर्स जोड़ा कि सेमानन को आम एडवाइस करि परिबा आ ट्रेसियरी प्रिवेंशंस रे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी जाए फैटल डिजीजेस आर मोर तो प्रिवेंटिव मेजर्स आउ ताकू कला बेलू को सेटा पॉसिबल हुएनी माने फैटल डिजीजेस और लास्ट डिजीजेस दैट गोटे कैंसर एड्स ए सब डिजीजेस जोड़ा तो सेटा कंट्रोल रे आसी पारेनी most prevention suggestions are primary or secondary prevention efforts for individuals yet in the context of environmental health prevention is much broader because exposure to many contaminants is beyond the control of individual and the prevention framework eta hala what is prevention then chapter 2 is background of the studies background of the studies we will mention what is the importance of nutrition to prevent to control this kind of communicable diseases then we have to write overall current situations including obesity diabetes cardiovascular disease osteoporosis etc are controllable diseases what is the importance of nutrition to prevent all these kinds of controllable diseases then we will write something about our nutrition or nutrients protein carbohydrate fats vitamins minerals water fibers how they are important in our to control preventable diseases so we have to write about background of the disease we have to write about importance of nutrition in these diseases as well as we have to write the importance of nutrients to control these diseases. Then scopes of work. Scope of work refers to the prevention of nutritional disease are depend upon the researcher. The nutritional disorder such as PEM, protein energy malnutrition, vitamin A deficiencies, iron deficiency, vitamin B complex deficiency, iron deficiency calorie intake. Iron deficiency is there. One is the PEM, another one is VAD, vitamin A deficiency. Third one is iron deficiency. Fourth one is vitamin B complex deficiency. Then iron deficiency is there. Then marasmic kwashiorkor mark protein deficiency and mark calorie insufficiency signs presents and sometimes referred to as more severe form of malnutrition than marasmic kwashiorkor is very much dangerous. Even it causes lead to death also, death of the child. So these are the nutritional disorder. Then body weight reduced less than 60%, etc. Wasting in case of scope of work in marasmic kwashiorkor is wasting, muscle wasting, growth retardation is seen, mental changes, then abnormal temperatures, etc. are there. Scope of works. Then aims and objectives of the studies are we have to aims and objectives we will determine the nutritional anemia among the respondent then iron deficiency among the respondent in pregnant women in PEM diseases among children etc these are the aims and objectives of the studies to correct the nutritional to correct the to advise the patients to the good nutritional suggestion or good nutritional treatment or dietary management of these diseases then get the good results to correct the anemia to correct the iron deficiencies to correct the PEM तो सेटा हला हमर एम्स और ऑब्जेक्टिव एम्स हला हमें आइडेंटिफाई करिबा के सब हमर एनीमिक अछंती के आयरन डेफिशिएंसी रे अछंती के प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन रे अछंती आ ऑब्जेक्टिव्स हला हाउ विल यू कंट्रोल द दिस काइंड्स ऑफ डिजीजेस हम तो केमते कंट्रोल करि परिबा थ्रू आवर डायटरी मैनेजमेंट देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो हम सब ए जिंस रिसर्चर मानकर बाहर करि परिबा
Chapter 3 is methodology of the studies. Methodology रे sampling रे सब collection करिबा. Then we will nutritional dietary management of all these kinds of nutritional diseases. Will advise them as in osteomalacia, in calcium deficiency, in osteoarthritis, in rickets. We advise them to take vitamin D with calcium rich food. Then in vitamin K deficiency, we should advise them to take green leafy vegetables. Then geropathalemia, we will advise to take vitamin A rich food. Iron deficiency, anemic persons, we should advise. You have to write nutrient deficiency, list of nutritional deficiency disease such as PEM, protein energy malnutrition. We should advise to take right quantity of protein as well as energy by calorie. Then in rickets, you should take vitamin D with calcium. Then hypocalcemia, we should take advice to take vitamin D with calcium. Osteomalacia also there. We should prepare one table chart, and we will write one-sided as deficiency, nutritional deficiency disease, and other side we should advise the dietary management. Then nutrient deficiency or diseases can be result of poor nutritional intake, chronic health conditions, acute health conditions, medications, altered nutrient metabolism, etc. are there. And in Center of Disease Control and Preventions, the Center for Disease Control Prevention (CDC) estimates that less than 10% of the USA have nutrient deficiency. Nutrient deficiency vary from age, gender, race and ethnicity. Then population nutrient deficiency may be high as 1/3 of the population. So in outer countries, then in foreign countries, lots of nutritional deficiencies are seen there due to the no nutrient dense due to the deficiency of nutrient dense food in their regular diet. କାରଣ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିଜ ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରପର ବାଲାନ୍ସ କରିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରିଚ୍ ଫୁଡ୍ which are very much useful for our body or useful for our day to day life. तो ସେଇଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଡେନ୍ସ ଫୁଡ୍ ଦରକାର ତ ସେମାନେ ସେତିକି ନେଇନଥାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବେଶୀ କାର୍ବ ରିଚ୍ ଜିନିଷ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଠି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଡେଫିସିଏନ୍ସି. ଓବେସିଟି ଇଜ୍ ଅଲସୋ a nutritional deficiency disease. Obesity is also a malnutrition. Undernutrition is also a deficiency disease, and overnutrition is also deficiency disease. So nutritional deficiency disease. So in foreign countries, they were suffered from obesity or overnutrition. Then according to RDA indicates the average daily intake of particular nutrients to meet the requirements of the 97 to 98% of healthy people. Established to assume adequate intake when there is insufficient evidence to develop an RDA. EAR, the average daily intake of the nutrients that throughout meet the need of 50% of the individual. Then we should micronutrient deficiency in protein, fats and calories. Macronutrients deficiency includes the deficiency in protein, fat and calories, which is known as protein energy malnutrition or weakness, can lead to stunting, pronounced wasting and large abdomen, etc. So
in macronutrient deficiency, all the symptoms are seen in the patients or the persons. So we have to advise to take right quantity of protein, fats, and energy or calories. In kwashiorkor is the disease of the PEM. Then prolonged inadequate intake of protein. If you are taking inadequate intake of proteins in our diet, then the growth is stopped, or it is known as stunting, and also very paleness skin, and hair color changes to coppery red color. Then edema is also seen, etc. Then we should give the iron, folic acid with macronutrient, macronutrients such as protein, fat, and calories in the diet. Then, according to NS2 data, the proportion of women who are participating in adequate nutrient intake of vitamin E, and greater than 50% pregnant women participate in adequate intake of iron and calcium. So, according to this report, the data shows that lots of pregnant women are anemic due to the inadequate intake of iron in their diet, iron and vitamin C in their diet. The lack of awareness, lack of knowledge, they should not take right amount of iron, folic acid, vitamin B12, C in their pregnancy period. So hemoglobin level will decreases. Then vitamin D supplements for 400 international unit Delhi. Additionally, infant who are born to mother who are vitamin D deficiency are most likely to be deficient in cell. तामाने आपण सबु प्रकार न्यूट्रिशनल कम्युनिटी न्यूट्रिशनल डिजीजेस जोड़ा कि बहुत कॉमन, जो कि मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेट्स आर वेरी हाई इन आवर कंट्री, इन आवर स्टेट. तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी रेटटा जोटा कि बहुत हाई अच्छी. तो आम कम्युनिटी प्रिवेंटेबल डिजीजेस लिस्ट बनैबा एंड कम्युनिटी प्रिवेंटेबल कम्युनिटी न्यूट्रिशनल डिजीजेस जोड़ा रहिला, जेमती कि आयरन रो डेफिशिएंसी रुहे मदर्स मानकर एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी टाइम रे जो आयरन डेफिशिएंसी हुए से भी आम मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट विल इंक्रीजेस. तो आम से माँ मृत्यु हार बहुत बढ़ी थाए, as well as आमर इनफैंट मोर्टालिटी रेट वर ऑल्सो इंक्रीजेस. तो से कि तो आम जो प्रोजेक्ट बनैबा, तो आम को मानक नवा जोटा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस जो मैंने अच्छा प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं पारिबा ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन रिच फूड इन द डाइट. तापर रहिबा एट द टाइम ऑफ लैक्टेशंस ऑल्सो मदर डिड नॉट टेक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ nutrition to feed their baby as well as her also. ମାନେ ତା ସହିତ ତା ବେବିକୁ ଫିଟ୍ କଲା ଭଳିଆ ଆମର ସେତିକି ଆଇରନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ସବୁ ନେଇପାରେନି. ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍, ମାନେ ସାମ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ସିଭିୟର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କେସେସରେ, the children were also not getting right quantity of calories, proteins and fats in their diet due to the lack of knowledge of her of the mother. तो चाइल्ड्स मदर जेहेतु इलिटरेट थाए कि बिलोंगिंग टू लो पॉवर्टी लाइन, तो सही केसेस रे तो ये सब हुए. तो एडा सब आमर कम्युनिटी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस आर देयर. तो आ ऊपर जदि प्रोजेक्ट बनैबे तो यहाँ टिके फ्रुटफुल हम, कारण यही सब लोक मान जोटा vulnerable group of people who are belonging to this group, then lots of nutritional deficiency are seen in this kind of people. तो आमको बेसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज आमको कोठी मिले ना, ये सब vulnerable group of people कठारे मिल जाए. तो जो माने रूरल अर्बन स्लम रे रुहंती, रूरल एरियाज रे रुहंती, ताकर मेन कॉजेस हला ड्यू टू द इग्नोरेंस, आउट हला लैक ऑफ नॉलेज एंड आल्सो पॉवर्टी. तीनटा तांकर रीजंस फैक्टर्स रहउची. तो एई तीनटा पाई कि से माने बेसी माने हमर फेटल as well as मैटरनल
maternal infant mortality rate will goes to high and high day to day. Day to day रे एटा बढ़ी चलची. तो आमे जदि नबा तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस इन कम्युनिटी रे तो आमे ए तीनटा ग्रुप को ऐड करि परिबा. चिल्ड्रन रो सन एंड लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट. Then nutritional deficiency disease रे आमे कोन गोटे चार्ट करिबा जोथरे कि न्यूट्रिएंट रो इंफॉर्मेशन थिबो what are the right kind of nutrients which is very necessary for this kind of people. Then we should list down one nutrient list, and then what are the functions of the nutrients, then sign and symptoms of deficiencies. Then first of all we will vitamin A deficiency, also a nutritional deficiency, and functions are involved in immune functions, vision, cell growth and cell communications. Then signs and symptoms of vitamin A deficiency are, one of the is night blindness, gerophthalmia. So when we will find this kind of signs and symptoms in any person such as night blindness and gerophthalmia, then we will distribute the patients as vitamin A deficiency disease. Then vitamin B6 involved in greater than 1100 enzyme reaction in the body and involved in protein metabolism. So involved in vitamin B6 very helps coenzymes of the protein metabolism. Then microcystic anemia, scaling of the lips and cracks in the corners of the mouth and swollen tongue and depression and confusions are there. One is microcystic anemia. Then it has the sign and symptoms. Scaling of the lips means the cracked lips is seen and cracked corner of the lips are seen. Mouth corner of the both side of the mouth and swollen tongue and depression contusions are also there. This is grouped under as vitamin C deficiency. Then vitamin B12 deficiency involved in RBC formation, neurological functions, DNA synthesis. Then it is known as, what is the vitamin B12 deficiency means, we will call as megaloblastic anemia. And vitamin C B6 deficiency, microcystic anemia. Fatigue, weakness, constipation, loss of appetite, weight loss are seen in this. These are the signs and symptoms of vitamin B12 deficiency. Then vitamin C, formation of collagen, involved in the formation of collagen, certain neurotransmitter and protein synthesis. So in protein metabolism, C is also plays a vital role. Then signs and symptoms are development of scurvy, and which would fatigue, inflammations of the gums, and weakened connective tissues. Then we will while we are doing research in this nutritional deficiency disease, what kind of nutritional diseases are seen in our society, we should list down one list: vitamin A deficiency, B6 deficiency, B12 deficiency, C deficiency. D deficiency is also very common. It is promotes calcium absorption and proper bone formation, involved in cell growth, immune functions, reduces inflammations. So vitamin D is very much necessary, and signs and symptoms are development of rickets in children and osteomalacia in adults. Rickets means bow types, bones are seen in lower limbs, bones are shaped like bow type or empty curve type ro he jaye rickets re. ଅଷ୍ଟୋମାଲେସିଆ ରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟୋମାଲେସିଆ ଦେଖାଯାଏ ତ ଆମର ଲିମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନ ହେଇକି ଟିକେ କର୍ଭ ସାଇଜ୍ର ହେଇଯାଏ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଆମକୁ ପ୍ରପର ଆମାଉଣ୍ଟରେ ମିଳେ ଥ୍ରୁ ସନରେଜ୍ and also the oil soluble vitamins. Then calcium, involved in muscle function, nerve transmission and proper bone formation. Development of osteoporosis. So development of osteoporosis गोटे अच्छी
जोटा बोन्स पोरस टाइप रो हो जाए तो यहाँ बेसी वुमेन्स मानकर भितर देखा जाए ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम आफ्टर चाइल्ड बार्थ पर जदि से प्रॉपर इनटेक ऑफ कैल्शियम्स नहीं नथिबे देन देयर बोन्स विल गोज ऑन पोरस टाइप्स देन पोरस टाइप्स माने तार किछि स्ट्रेंथ न थाए जदि कोठी टिके भी बाजी जीवो तो सेटा पूरा माने पूरा भांगी जीवो तो कहती osteoporosis it is due to the lack of calcium. Then folic acid deficiency the folate involved in the synthesis of RNA and DNA and is required for cell division and prevention of neural tube defects. Neural tube defects at the time of childbirth is seen if the mothers will take insufficient amount of folic acid in her pregnancy period. Pregnancy period रे हमें देखिबा जदि mothers रो hemoglobin level less than 10 आसुची सबु बेले in regular form in 40 weeks तापरे तार छुआ जन्म हेले सेटा न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसीज डिफेक्ट्स आसे तो सेतिपैं कि ताकू कहती मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया गोटे हला B12 आ गोटे हला फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज नोन एज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो साइन सिम्पटम्स रे हमर आसी जीवो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी आसिले मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहिबा तो वी शुड advise the lactating or pregnant mother to take folic acid in her diet. Right amount of folic acid in the diet about 30 mg to 100 mg per day through IFA tablet as well as with food. तो आमे तांको folic acid tablets भी कहबा plus ता सहित dietary source of iron also we will advise to the pregnant women. Then iodine deficiency, a component of thyroid hormone that regulate protein metabolism synthesis metabolism and enzyme activity. In enzyme activity in metabolism iodine is very much necessary when the sign symptoms are stunted growth and neurodevelopmental deficit. जदि न्यूरोडेवलपमेंटल डेफिसिट हबो बा तार माने माने आमर जो मूवमेंट सब रुहे जॉइंट्स मूवमेंट्स हो बा हैंड्स लेग्स रो मूवमेंट हो एनी मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स रो जदि डिफेक्ट्स देखा गला आ तार ग्रोथ हाइट अनुसार बा एज अनुसार न बढ़िला इन स्टंटेड ग्रोथ एंड न्यूरो डेवलपमेंट डेफिसिट then we will find that the person will affected with iodine deficiency. तो आयोडीन डेफिशिएंसी मध्य दरकार जोटा कि आयोडाइज सॉल्ट रु मिल जाए प्लस हमको सी फूड्स मानक भी आयोडीन मिले आ केते केते जगह रे आयोडीन डेफिशिएंसी हुए हिलीज एरियाज रे ई सब रे तो आयोडीन रो हमें आयोडाइज सॉल्ट रु हमको मिल जिवो. Then iron deficiency, a component of hemoglobin and therefore important in the transfer of oxygen to lungs to organ, involved in the synthesis of hormone as well as normal growth and development. Setala microcystic anemia, hyperchromic anemia, congenital function, regulation, depression, immune function, spoon-like shape of the nail. Our sign symptoms kono when we will see some of the nails are in very spoon shape. These like curve shape nails are also seen. These are the iron deficiency anemia and paleness seen and weakness also seen. These are the deficiency of iron. Then magnesium involved more than 300 enzyme, loss of appetite, fatigue, weakness, nausea. So weakness is weakness since fatigue or paleness, weakness, nausea type tendencies in or loss of appetite. तो यही सब केसेस रे तो कौन हुए ना हमें जानू कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी इज देयर तो मैग्नीशियम रिच फूड वी हैव टू एडवाइस टू द पेशेंट. अदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आर मैग्नीशियम continued or zinc deficiency involved in cells metabolism, enzyme activity, immune functions, protein productions, metabolism, wound healing, synthesis, cells division. Zinc sign symptoms eka stunted growth will stop at our according to our age. Then depressed immune functions, hair loss, eye skin lesions delayed, wound healing and taste alterations. तो आमर ये सब जिनस माने ग्रोथ स्टॉप हो जाए, इम्यूनिटी बहुत डाउन हो जाए,
माने टिके टिके जिनस रे हमकु सांगे सांग हमकु टिके टिके जिनस रे हमकु सांगे सांग से जिनसटा बेसी स्प्रेड हो जाए तो से कि डिले वुंड हीलिंग हुए ड्यू टू द लैक ऑफ जिंक. So we should take zinc in right quantities at the time of any deficiency disease or any inflammation, any infections, at the time of lactation, at the time of pregnant women, at the time of pregnancy. तो प्रेगनेंसी टाइम रे जिंक रो बहुत दरकार हुए. हमर जिंक सबुठु बेसी थाए कोथरे ना हमर राशि रे सिस्मे सीड्स रे 90% जिंक थाए. तो सेति कि ओरल अल्सर्स जेतेबेले हम पार्टी रे सब घा बारे सेतेबेले ट्रेडिशनल वे रे दे शुड च्यू द सिस्मे सीड्स एंड थ्रो इट अवे. से माने कोन करथले राशिटा को चोबे की बाहर को फोपाड़ी दोथले. तो राशि रे जेहेतु जिंक कंटेंट इज वेरी मच more content of zinc is more in sesame seed, so it heals our oral ulcers. पार्टी रे जो घा बारे तो इसलिए राशि को चोबे की से फोपाड़ुले कि आमर पार्टी रे घा बाहरले कि जो डेफिशिएंसीज हेले रिबोफ्लेविन डेफिशिएंसी ए सब जिनस बाहरले से पार्टी रे चोबे की फोपाड़ुले. तो ता माने सेटा सेही राशिटा बाजे की सेटा हिल होउतला. तो जिंक इज वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर द in cases of nutritional deficiency disease. Then implications of WIC nutrition services. Then data analysis and interpretations of the study. Data analysis रे हमें कौन ना what are the hindrances in our studies बा limitations कौन थाए. कारण limitations रे हमें गोटे जिनस देखिबा कि research work is based on the data collected from the secondary data. secondary data टा हमको easily मिली पारेनी कारण सेटा जेहेतु गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रे मेंशन है कि थाए in medical or in offices of birth and death offices are there or hospitals are there. तो माने easily से data जोड़ा मिलेली. तो poor availability of secondary sources of data and based on the information provided discussion held with the stakeholder. तो stakeholder को right समस्त को to information particularly मिली पारेनी. The study finding recommendation given are based on the limited coverage of states faraway places. एटा सब ता limitations अच्छी. Our tools we are using we are already discussed about interview schedules, observations, participating approach and focus group discussion. Then key components of prevention are individual, local, state, federal efforts. Prevent environmentally caused illness and diseases have had some success, but a more comprehensive effort should be useful in meeting the overall environmental health challenges facing the United States. तो आमे सबू की components of prevention सला individually आमे करि परिबा local, states, federal efforts, some government, non-government organizations we should. Then awareness programs is very much important. We have to aware the respondent. Awareness programs is comes under participating approach as well as in observation approach. Observation approach as well as participating approach and focused group discussion is also there. It is known as awareness and education. How we will aware the persons who responded in their way. माने जदि से रूरल एरिया रे अछंती आमे जदि तांकू अर्बान रो लैंग्वेजेस यूज करिबा बा हाई जिंस यूज करिबा तो से माने सेटा को बुझी परिबेनी. तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन तांको भलिया ही हेतिबा दरकार जोते कि से माने को इजी टू ऑब्जर्व easy to utilize after awareness camps, after awareness education they should utilize in their daily life. तो से माने एमिति जिंस तांको कहिबा एमिति जिंस अवेयरनेस करिबा तो सेथरे से माने सेटा को एक्सेप्ट करिवे एंड यूटिलाइज मध्य करिवे. तो अवेयरनेस एंड एजुकेशन इन द इन्फॉर्म एंड एजुकेट डिस्कशन मेथड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स
individual about science-based health prevention approaches that will have the greatest benefit and impact public health. तो आमे कौन करिबा ना पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर्स आर देयर, विलेज हेल्थ गाइड्स आर देयर, आशा कर्मीज आर देयर, तो से माने तांको संगे लिंक रे थांती, तो आमे तांको अप्रोच करि परिबा एंड ग्रेट बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ, तो से माने को थ्रू रे मध्ये आमे करे परिबा प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव ऑफ इंटरवेंशंस, इन्फॉर्म पॉलिसीज, educate workers both in and out of the health field who may have daily contact with people at high risk of disease and injury, तो सेमान को एजुकेट करेबा, हेल्दी बिहेवियर स्क्रीन एंड हेल्थ रिस्क कंट्रीब्यूट एजुकेशन टू द कम्युनिटी, तापर प्रोवाइड द पब्लिक एंड हेल्थ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, हेल्थ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन मीन्स we should clean our hands before taking food, then after defecation, clean our environment, take good quality of foods, not the stale foods, माने बासी खाद्य न खाई भल खाद्य खाइबा, तापरे आमर एनवायरनमेंट को क्लीन रखिबा, वी शुड मेंटेन हैंड एंड हाइजीन मेंटेन करिबा, जोटा कि डिजीज रो कारण, तो सेटा हला हेल्थ एजुकेशन, माने फूड शुड बी प्रॉपर्ली कवर्ड, कारण तादरे माछी पाछी बसिले इन्फेक्शन स्प्रेड हबो, तो सेरा सब अवेयरनेस प्रोग्राम्स रे जिवो, मीडिया टू हाइलाइट द पब्लिक हेल्थ इश्यूज, देन वर्क विथ मीडिया टू हाइलाइट पब्लिक हेल्थ इश्यूज, तो आमे जदी किछि माने जोटा कि लोक माने आर्टिकल एक्सेप्ट करूछन कोटा ना टीवी मीडिया रेडियोज ए सब जिनस रे बेसी अछन, तो आमे सेठी भी आमे health informations दे परिबा, then estimate program to proactively distribute information to targeted group, those at high risk of disease or injury, then research, identify and support an environmental public health research agenda at the national level, then monitor environmental risks, hazard evaluations etc. The awareness and education रे आमे तंको अवेयर करिबा कि जदी किछि deficiency nutritional diseases अछि, so you have to take this kind of right kind of nutrition in your diet, add right kind of nutrition in your diet, ता छड़ा आमको क्लीननेस मेंटेन करबा को पड़िबो, जा फल रे कि जो न्यूट्रिएंट रिच फूड आमे खाइबा जदी अनहाइजीनिकली वे रे आमे ताको गला तो बॉडी सेटा एब्जॉर्ब करिवोनी, तो टेक प्रॉपर रेस्ट भी करिबा, प्लस एनवायरनमेंट क्लीन रखिबा, तो ए सब जिंस को आमे अवेयर करिबा, खाली खाइ देले हबनी, तो खाइबा सहित जोटा प्रिवेंटेबल मेजर्स जोड़ा हैला, हैंड हाइजीन हैला कि राइट प्रपोर्शन रे नबा, कि खाली ताको खाइ देले हबनी, राइट प्रपोर्शन रे नबा, राइट टाइम रे फूड नबा, ए सब जिंस टिप्स आ मैनेजमेंट सडा आमे ताको अवेयर करिबा, देन न्यूट्रिशनल प्रिवेंशंस रे आमे सॉरी नेशनल प्रिवेंशंस रे से लिखिछंती, तो we should use clean water, stop taking tobacco, then etc. एरा सब अपन टिके टिके दे देबे, जेहेतु एटा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज पई कि हमें ये अवेयरनेस ताकू करेबा, then nutritional disease analysis with table form रे लखिबा, तो table form रे we have to write, then protein deficiency symptoms are weight loss, muscle wasting, weakness, edema, and preventable measures are we should take protein rich food such as meat, poultry, fish, eggs, dairy products, legumes, nuts, according to the economically conditions of the patients. आमे जदि रूरल एरिया रूरल बा अर्बन स्लम्स रो आमे नौचे, तो तांको प्रिवेंटेबल मेजर्स रे तांकर फूड अवेलेबिलिटी ऊपर आमे तांको कहिबा कि तांकर लिग्यूम्स अवेलेबल हे परिबो, नट्स ता मे बी अवेलेबल न हे पारे, तो एग्स अवेलेबल हे परिबो, फिश अवेलेबल हे परिबो, तो तांकर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिकली status বা conditions we have to advise according to them as a good quality of protein rich food. Then iron deficiency anemia, fatigue, shortness, we should prepare one type of table, nutritional diseases are there, symptoms and preventive measures are there.
effective of the host. Affected fish inhabit poor growth of the severe emaciations, prolonged deficiency. Then lots of diseases are there. We have to clearly mention what chart. You should prepare one chart with table form. One side nutritional disease, one side symptoms and preventable measures are there. Then we will take when our research title was protein energy malnutrition or kwashiorkor, then we will mention here as kwashiorkor. What is the kwashiorkor? In which age it is occurred? Then kwashiorkor is severe form of protein energy malnutrition. It is very common in the age group of 1 to 4 years of age due to the lack of protein and calorie in the diet, and such as energy, vitamin, minerals are also deficiency. Then kwashiorkor has led a number of serious health problems, growth failure, weakened immunity, and even death is also causes. Then we should prepare one table. Nutrients, protein, energy, vitamins and minerals. Recommended intakes are proteins is 1.2 to 1.5 gram per kg body weight of the child. If the child weight is 5 kilo, then we will calculate with 1.2 into 5 kilos, then we will get the protein amounts. Then so good sources are meat, poultry, fish, eggs, dairy products, legumes, nuts, seeds, etc. Then we will advise to the child to take according to their age. Then energy 9 to 100 kilocalorie per kg body weight. Then 5 into 100 is we will calculate the calories according to the 100 calories per kg body weight. Then carbohydrate such as rice, wheat, potatoes, and in fats, oils, butters, etc. In vitamin A, in vitamin and minerals, all kinds of colorful fruits and vegetables contain vitamins and minerals. Whole grains are also good sources of vitamins and minerals. We should prepare one khichdi. Khichdi is very much nutrient dense. We should prepare khichdi. We will add rice, then dal, then also ghee, and some colorful vegetables are there with green leafy vegetables. All kinds of colors are there. It is known. It comes under vitamins and minerals, energy, proteins, and ghee is also good quality of fats. Khichdi is very much. Khichdi is a good nutrient based diet for the kwashiorkor patients because the requirement is protein, energy, then fats. In energy, carbohydrate fats are there, and vitamin minerals are also very much necessary. That's why khichdi is very much necessary. Then in chapter 5, conclusion, summary and results are there. Then nutritional disease are nutrient related diseases, conditions and causes illness in humans, deficiency excess in diet, obesity, eating disorder, chronic disease such as cardiovascular disease, hypertension, cancer, diabetes, etc. Chronic diseases, or in human, poor nutrition can cause deficiency related diseases, blindness, anemia, scurvy, food pattern bad, etc. We should write about the poor nutrition cause deficiency disease. Then we should plan nutrition study of the chemical elements for the plant growth, and we will result is all through so-called civilization, heart disease, cancer, stroke, diabetes, etc. are controlled in dietary management. So dietary management, all kinds of nutrient deficiency diseases we can control through our dietary management is the results. And then references, you should take all kinds of authors, abstract, etc. in your references. In primary sources data, we should interview the respondent.
Then we should prepare one questionnaire method for primary data collections. These questions are: is eating a variety of fruits and nuts important for preventing nutritional diseases? Should you limit your intake of processed foods and sugary drinks? Then important to maintain a healthy, is it important to maintain a healthy weight? Should you get regular exercise? Can a balanced diet help to prevent cancer? Can eating a healthy diet help to reduce your risk of heart disease? Can eating a healthy diet help to prevent type 2 diabetes? Can eating a healthy diet help to prevent osteo? All kinds of nutritional deficiency disease. Is the what is the importance of diet in this conditions? We have to prepare one questions of 20 to 30 number of questions are there. You should ask to the question, not all kind of questions you should ask to one respondent. If the respondent is deficiency, if the respondent is if the respondent is suffering from osteoporosis, then you will prepare a question related to calcium deficiency rich. Then whether eating a healthy diet help to prevent osteoporosis, what is calcium diet, what kind of calciums you are taking in day-to-day life, what are the availability of the calciums in your area. तुम एरिया रे कैल्शियम जदि से गोटे आम जदि गोटे कैल्शियम डेफिशिएंसी रो जनक नेलु बा जदि ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को नौचु तेबे सब प्रकार क्वेश्चन आमे आधरे रखि परिबा जदि पर्टिकुलर गोटे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को नौचु देन वी शुड प्रिपेयर क्वेश्चन रिलेटेड टू देयर सफरिंग डिजीज रहिला हमर कोन प्रिवेंशंस ऑफ न्यूट्रिशनल डिजीजेस आउ सेटा थिला हमर एनीमिया सॉरी सेटा हमर थिला about our lactating mother nutrition thila then এইভাবে ভাবে আপন মানে সিনopsis প্রিপেয়ার করিবে প্লাস সিনopsis পরে ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଫାଇନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ सिनोप्सिस टा जानले तो केमती प्रिपेयर हुए सिनोप्सिस प्रिपरेशन रे किछि डाउट्स अछि ନା ଆଉ ଥରେ ପଢିଲେ କିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଜଣା ପଡିବ ପୁରା ରିଭିଜନ କଲେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଏବେ ପଢେଇଲେ ରିଭିଜନ ଆଉ ଥରେ କଲେ କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଥିବ ଯଦି ଜଣା ପଡିବ हाँ सिनोप्सिस प्रिपरेशन रे आपण माने बुझिले तो केमती को स्टेप ହଁ बाय ହଁ स्टेप प्रिपेयर Yes, sir. रे हमकू एक्चुअली सिनोप्सिस प्रिपेयर माने गोटे माने हमर शॉर्ट फॉर्म रे सिनोप्सिस टा प्रिपेयर करले माने रिसर्च रो शॉर्ट टाइप रो तो आमे से जिसटा प्रिपेयर कला परे सेटा हमकू अप्रूवल आसिला परे हमें ताकू डिस्क्राइब करिके हमें ताकू करिबा
तो जेमिति जेमिति सिनॉप्सिस रे आपण माने रखिथिबे स्टेप बाय स्टेप सेमिति आपण प्रोजेक्ट रे मध्ये रखिबे किंतु प्रोजेक्ट रे एलाबोरेट करिक लिखिबे सिनॉप्सिस रे शॉर्ट फॉर्म रे लिखिबे है ना किंतु निजे निजे बनेइबे सब एब्स्ट्रैक्ट सब करिवे एब्स्ट्रैक्ट लिखिबे है ना एब्स्ट्रैक्ट टा सब नेट रे मिलुची अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक हिसाब रे बहुत सारा एब्स्ट्रैक्ट को आपण देखिबे केमती एब्स्ट्रैक्ट टा लिखा है ना केते शॉर्ट फॉर्म रे हमर इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन टू कंट्रोल आमे धर 8 डिजीज ऊपर कलु प्रिवेंटेबल प्रिवेंशन ऑफ एटा हमर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज तापर गोटे छुटिया एब्स्ट्रैक्ट बनेबा इंपोर्टेंस टा कोन तो आमे कौन कौन माने एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स नेला परे हमर सब न्यूट्रिशनल डिजीज को हमें कंट्रोल ले रखिबा इंपोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन टा कौन आउ ता सहित हमर हैंड एंड हाइजीन गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस आर आल्सो इंपोर्टेंट दीटा प्रकार करे कि गोटे छोटिया एब्स्ट्रैक्ट टा लिखिबे छोटा एब्स्ट्रैक्ट लिखिला परे जाय कि आपण इंट्रोडक्शन देबे अबाउट द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस सडा कौन आउ सेटा केमती कौन माने सेटा डिजीज कौन आ तार कजेस कौन एटा सब लिखिबे आउ जदि किसी स्पेसिफिक डिजीज नेबे साइन सिम्पटम्स मध्ये लिखिबे स्पेसिफिक डिजीज किछि नाही आ रिलेटेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज लिखिबे तार किछि दरकार नै बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी रे आपण लिखिबे तार केमती इंपोर्टेंट न्यूट्रिशन तापरे हमर फूड न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स केते सब इंपोर्टेंट हमर देह पई हला न्यूट्रिएंट्स रो वर्क छडा सब कोन लिखिबे तापरे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रे एम्स कोन रहिबो ना हमें वी हैव टू फाइंड आउट द anemic women in that particular research area रे केते एनीमिक अछंदी केते आयोडीन डेफिशिएंसी केते चिल्ड्रन मान भितरे माल न्यूट्रिशंस अछंदी तो एम्स हला सेया कि जदि आपण माने प्रेग्नेंट ऊपर करिवे तो एम्स हला आमे प्रेग्नेंट वुमेन करो हेल्थ बेनिफिट्स देखिबा से माने जेमती तांकर जो एनीमिक जोटा अछंदी हमर एम्स हला वी हैव टू फाइंड आउट द एनीमिया ratios of anemic women of ratios of to nahi first we have to find out the anemic women at the stages of pregnancy time रे केते anemic women अछंती we have first of all we have to find out बा आमे तांकू फाइंड आउट कला परे एम्स हला हमर कोन ना एनीमिक माने ये को हमें फाइंड आउट करिबा माने अंडरवेट हमें प्रेग्नेंट वुमेन को फाइंड आउट करिबा आयोडीन डेफिशिएंसी हो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो हमें मानक सब फाइंड आउट करिबा तापरे ऑब्जेक्टिव हला हमें ताको न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट दे कि को टाइप रो सब ट्रीटमेंट हो को टाइप रो अवेयरनेस प्रोग्राम्स को टाइप रो हमें ये सब देला परे सेटा हला हमर ऑब्जेक्टिव तापरे हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर रू सब जाक इन्फॉर्मेशन काढिबा को माने एनीमिक डेफिशिएंसी बा एनीमिया ऊपर आयरन डेफिशिएंसी ऊपर ऑलरेडी प्रोजेक्ट करिसंती कोन रिजल्ट्स आछि को स्टेप्स फॉलोस करिसंती तो सेडा रखिबा आ किछि बुक्स एंड आर्टिकल्स रो भी मध्ये ऐड करिबा माने ऑथेंटिकेटेड बुक्स एंड आर्टिकल्स पब्लिक मैगजीन सेमिनार पेपर्स तापरे हमें सैम्पलिंग करिबा सैम्पलिंग रे हमें कौन सब नंबा डाटा सब कौन को आनिबा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डाटा ये सब आनिबा टूल्स कौन व्यवहार करिबा क्वेश्चनर मेथड अवेयरनेस प्रोग्राम इंटरव्यू ना ग्रुप डिस्कशन ये सब जिनस हला हमर टूल्स कौन व्यवहार करिबा तापर डाटा एनालिसिस टैबुलेशंस टा हमें कौन करिबा ना एतिके हमें टेक्निक यूज कलु ए जिनस अवेयरनेस प्रोग्राम कलु तापरे हमें टू फाइंड आउट द एनीमिक वुमेन्स अमंग लैक्ट माने प्रेग्नेंट वुमेन तो एटा बाहर करियो तार रेफरेंस कौन नेलु एटा हला हमरो सिनॉप्सिस
शॉर्ट फॉर्म रे रखिला परे जेतेबेले अप्रूवल मिलला परे देन वी हैव टू गो फॉर द डिटेल्स तो तापरे आपण डिटेल्स सेही जिंस को डिटेल्स एलाबोरेट करिवे कौन प्राइमरी डाटा नेले कौन क्वेश्चन प्रिपेयर कले कौन केस स्टडी केते जन को नेकी कले केते जन ता भीतर अछंती को एज ग्रुप रे प्रेग्नेंट अछंती तो से मन को भितरे माने एई सब जिंस कौन कौन मेडिकेशंस रे अछंती हेमोग्लोबिन लेवल केते अछि तो आपण माने से सब क्वेश्चन बाहर करी केस स्टडी मेथड करिवे तापरे डायटरी मैनेजमेंट रे आपण माने डायटरी मैनेजमेंट को आपण निजे हमर माने ऑथर्स अछंती बुक्स अछि रिसर्चर्स जो मान आपण फॉलो करछंती से मान कौन न्यूट्रिशन नेला परे तांकर रिजल्ट्स भलो आसिला तो सेगुड़ा को डायटरी मैनेजमेंट सम किचन रेमेडीज आल्सो यू हैव टू मेंशन किचन रेमेडीज रे मध्यम बहुत जिंस होता तो होम रेमेडीज भी किसी ऐड करेंगे जोटा कि आमर न्यूट्रिशनल ये भी आसूची अंडर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अंडर आसूची किचन रेमेडीज रे होम रेमेडीज रे तो तापरे प्रिवेंटिव मेजर्स आर देयर प्रिवेंटिव मेजर्स देबे तापरे जल्दी कहार एते डेफिशिएंसीज रही तो इंक्लूडिंग मेडिसिन नेले प्लस डायटरी मैनेजमेंट कले तापरे तांकर हेल्थ इंप्रूवमेंट कला जो केसेस रे दरकार हमर डायटरी मैनेजमेंट एनीमिया पई कि बहुत दरकार उडा प्रेग्नेंट होम पे आईएफए टैबलेट तो सेति पई कि आमे ताकू देखि करबा किंतु आमे पूरा फोकस करबा आउ ट्रीटमेंटा हमरो आयरन डेफिशिएंसी माने सॉरी ट्रीटमेंटा हमरो डायटरी मैनेजमेंट हबार अछि तापरे आमे ओटे ग्राफ प्रेजेंटेशन करबा एतिकी लोक को आमे आयरन फॉलिक एसिड माने आयरन रिच फूड देलु विटामिन सी देलु एतिकी ग्रुप नेला परे एतिकी एतिकी तापरे हेमोग्लोबिन रेट रो गोटे करबा तो ए एज ग्रुप तळे एज ग्रुप दे देबा एपटे हेमोग्लोबिन रेट दे देबा तो एतिकी एडोलेसेंट जो माने रहिले तो से मानकर हेमोग्लोबिन एतिकी परसेंटेज बढ़िला मिडिल एज ग्रुप मानकर एतिकी रहला 45 एज भितरे हमें नहीं परिबा जोटा कि हमर चाइल्ड बियरिंग एज जोटा बा रिप्रोडक्टिव एज तो हमें नहीं कि ग्राफ प्रेजेंटेशन करबा तापरे हमें रिजल्ट्स रे सेटा को लिखिबा तापरे बिब्लियोग्राफी दबा लास्ट बेल को कहा काटू नेलु बहुत सिंपल आपण माने कले सेटा प्रॉपर वे रे कले और थ्रू चैनल्स थ्रू योर गाइडेंस ऑफ द माने जो गाइड रो गाइडेंस नहीं कि आपण माने करि परिबे तो कले आपण उटे हेल्प होबो आउ कोन आ रिलेटेड कोन सब एटा तो कंप्लीट हे गेला कारण मु 2-3 प्रकार सैंपल्स देखै देली गोटे लैक्टेटिंग मदर गोटे टोटल प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर आ डायबिटीज आ जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जोड़ा सब रहला बहुत कॉमन अछंती किंतु न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशंस भितरे डायबिटीज ए सब हमर जो हमर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर रा जाउनी हमर न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशंस हमें कहा को करू ना यही सब वनरेबल ग्रुप ऑफ पीपल जो माने जाउछंती लैक्टेटिंग मदर प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रेन एडोलेसेंट गर्ल आउ एल्डरली पर्सन एतिकी लोक हमर आधरे जाउछंती हेल्थ जो मानो को अवेयरनेस बहुत दरकार जहार मैटरनिटी सॉरी मोर्टालिटी रेट इज वेरी हाई डे टू डे से को मोर्टालिटी रेट हाई होची ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन और अवेयरनेस तो सेतिपाई कि आमे जदि प्रोजेक्ट करबा तो ए रिलेटेड करबा दरकार चाइल्ड न्यूट्रिशन रे बहुत आसुची जेंति पीईएम आसिला प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन तापरे हमर ग्रोथ जोटा हमर चाइल्ड रो भी बहुत सारा डिजीजेस आसुची हला रिकेट्स गोटे आसिला तो रिकेट्स केसेस रे विटामिन डी डेफिशिएंसी आसुची स्पेसिफिकली चाइल्ड डिजीजेस ऊपर भी हमें करि परिबा तो आउ लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट आउ डायबिटीज एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जोटा जेस्टेशनल डायबिटीज जेस्टेशन बेले जो डायबिटीज ना हुए तो तापरे मध्य करि परिबे तो एटा भी डायबिटीज कंप्लीटली जीवनी बट जेस्टेशन टाइम रे जो डायबिटीज टा हुए तो तार मैनेजमेंट डायटरी मैनेजमेंट करि हबो आ रहला लैक्टेशन टाइम रे आ हमर एडोलेसेंट पीरियड रे जो ग्रोथ टाइम रे जो जो न्यूट्रिशन दरकार हुए सेटा ए सब जिनस को लेके आपण माने टॉपिक चूज करंतु किंतु
एटा हेल्थ अवेयरनेस हेल्थ एजुकेशन जो जो ग्रुप रो पीपल्स को दरकार ता ऊपर प्रोजेक्ट कले हबो आ सब डिजीज ए सब जिंस एते किछि ये नहीं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस जोड़ा आसुची हम जोड़ा पढिचु ऑलरेडी हमें 3 DNHE-3 रे पढिचु बदे तो विटामिन ए डेफिशिएंसी प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम रे हमें जेंती इम्यूनाइजेशन करू तो तांकू प्रॉपर न्यूट्रिशन दो इम्यूनाइजेशन ए सब दो सेटा भी हमरो डेफिशिएंसी रे बहुत माने मोर्टालिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट हाई हो जाए तो सेति पय कि विटामिन ए डेफिशिएंसी करि परिबे आउ आयोडीन डेफिशिएंसी आयरन डेफिशिएंसी है ना डी डेफिशिएंसी calcium deficiency micronutrient deficiency also there b vitamins deficiency b12 megaloblastic anemia so lots of topics are there related to this गोटे हला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज जोटा आ गोटे रहला ए सब vulnerable group of people एई भितरु टॉपिक चूज करिवे टॉपिक चूज करके आरी भितर करिवे जो थरे कि हमें ताको अवेयरनेस हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस we will give to the this group of people तो एई ग्रुप ऑफ पीपल को हमें केमती अवेयरनेस करि परिबा केमती ताको एजुकेशन दे परिबा रिगार्डिंग डाइटरी मैनेजमेंट as well as मैम आपण म्यूट हो जाइछंती अनम्यूट करंतु हमें यही सब एरिया को जाके यही सब टॉपिक ऊपर तो हमें आराम से करि परिबा तो यही सब टॉपिक को लेके कले एक्चुअली एटा जो हमरो सब्जेक्टटा जो अछि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन एटा अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो आमे सब अवेयरनेस करिबा एई सब ग्रुप रो पर्सन को जो मानकर मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रेट बहुत दिन को दिन हाई तो आमे एमान को अवेयर करिबा रिलेटेड टू द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स गोटे हला डाइटरी मैनेजमेंट करि परिबा प्लस इम्यूनाइजेशन पई करि परिबा हेल्थ चेकअप पई करि परिबा तो ए सब जिंस हमर हला अवेयरनेस ये तो गोटे मदर को हमें कौन एडवाइस करिबा you should measure your height and weight in daily basis in daily not in daily routine माने every 7 days रे तमे तमरो गोटे प्रेग्नेंट को कहिबा कि प्रति मास रे हो वीकली हो 15 days रे हो you should check your weight not height weight कारण in 40 weeks गोटे हेल्दी मदर और चाइल्ड पई कि हमर केते ना 10 to 12 किलोस बढ़िबा दरकार तेणु करे हाइट वेट इज इम्पोर्टेंट तो आमे तांकू वेट मेजरमेंट पई कहिबा तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट जोड़ा आमे करूछु तो सेटा देखिबा तापरे तांकर फिजिकल चेकअप देखिबा माने फिजिकली से माने लुक्स रे केमती अछंती माने पेलनेस देखा जाउची कि आई रे जेमती आखि रे जेमती आमे हेमोग्लोबिन को चेक करू तो सेटा माने सेटा को आमे चेक करि परिबा तो एई सबु जिनस फिजिकली देखि परिबा एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट रे देखि परिबा प्लस ता सहित तांको अवेयर करिबा कि तमे 40 वीक्स भितरे यू हैव टू गेन 10 to 12 किलोस ऑफ द वेट तापरे हेमोग्लोबिन टेस्ट करिया पई कि एडवाइस करिबा कि प्रति मंथली हेमोग्लोबिन आउ ब्लड शुगर चेकअप करिवे कारण शुगर रो इंक्रीज जतले बढ़े शुगर बढ़िला परे तो बेबी रो अबॉर्ट हबार बहुत चांस थाए तो यू हैव टू कंट्रोल आवर शुगर देन रेगुलरली माने एंते रूटीन चेकअप रे यू शुड मेजर योर बीपी ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहिबा दरकार शुगर कंट्रोल रहिबा दरकार हेमोग्लोबिन मस्ट बी इन ए गुड रेंज जेमती हमर 12 to 17 रहिबा कथा किंतु मदर्स मानकर जदी लेस देन 12 10 आसिला तबे से एनीमिक को गले
तो रिस्क फॉर बेबी एंड एज वेल एज फॉर मदर तो एम जनक हम तो एड़ा सब हमर अवेयरनेस ये आसूची तो सेटा को इंटरव्यू मेथड रे बा हमर इंटरव्यू मेथड हो कि हमर सेटा क्वेश्चनर मेथड आम सब मेंशन करवा इफ यू आर टेकिंग प्रेग्नेंट वुमेन इन योर रिसर्च फील्ड तो से वुमेन्स मानकर आमर लिखा पड़ो तांकर माने लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड बड़ू वेट रू पूरा सब मंथली 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 आमर 10 मंथ जाए देखा पड़ो नाइन 9 मंथ जाए देखा पड़ो तापरे आमर प्रति मंथली तांकर वेट मेजरमेंट करिया पड़ो वेटा इनक्रीज होची ना डिक्रीज होची डिक्रीज हेले बोथ आर इन अंडर नरिश बोथ मदर एंड बेबी तो अवेयर करवा कि आउ टिके वेट बढ़ाओ यू शुड टेक हाई कैलोरी रिच फूड है फैट्स को बढ़िया को पड़ो तापरे बीपी चेक करवा जदि हाइपोटेंशन हो जाउथबो तो सेतिपय कि बीपीटा माने बीपीटा भी माने गोटे लेवल रे मेंटेन हेक रहबा दरकार तो जदि लो बीपी होथबो वी हैव टू एडवाइज टू टेक ओआरएस सॉल्यूशंस और water, salt, sugary solutions, lemon solutions, potassium, sodium solutions, etc. Electrolyte balance. तो ये सब तांको फॉलो करिया दो जदि बीपी बहुत हाई होतबो देन से माने पुनी डॉक्टर कंसल्ट करिवे हाउ टू कंट्रोल देयर बीपी तापरे रहिला आ जदि किछ लॉन्ग टर्म वॉमिटिंग होची बहुत लॉन्ग टर्म वॉमिटिंग हेले तो सेटा को हम रखिबा वॉमिटिंग केते दिन होची आफ्टर फूड होची कि नहीं तो इफ वॉमिटिंग ऑकर्स तेबे सेथरे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाए बा सोडियम पोटासियम क्लोराइड एडा सब फॉल कला परे से पूरा वीकनेस दार बहुत जनरेट हुए तो सही केसेस रे हम इलेक्ट्रोलाइट को सोडियम पोटासियम क्लोराइड ए सब जिंस को हमें रिच फूड को बा वाटर डाइल्यूट करके दबा को कहबा तापरे हेमोग्लोबिन टेस्ट रो रिपोर्ट देखिबा हेमोग्लोबिन टा 10 एबव रहउचे दी माने सेटा माने ठीक नॉट गुड किंतु बैलेंस्ड तापरे जदि 10 तळु को रहला एनीमिक रहिले तबे हमें तुमको आयरन रिच फूड एडवाइस करा यू टेक आयरन रिच फूड विथ आयरन फॉलिक एसिड टैब्स ए सब हमें कहि परिबा नहले हमें डॉक्टर्स कंसल्टेशन रे पठेबा कि आयरन फॉलिक एसिड रिच सप्लीमेंट्स देबे प्लस हमें तांको आयरन रिच डाइटरी विथ विटामिन सी दबा तो यहाँ है रिसर्च मेथोडोलॉजी मेथोडोलॉजी रे हमें कौन कौन मेथड यूज कले आमे किछि ब्लड पैरामीटर्स चेक कले तापरे फिजिकली चेक कले तापरे आमे तार माने माने सब कंडीशंस रा देखिले कि को टाइप रो वॉमिटिंग होची कि ताकू वीकनेस होची तो ए सब जिंस को भी हमें रखिबा साइन सिम्पटम्स सेटा हला साइन सिम्पटम्स रखिबा continued vomiting is there continued weakness is there तो ये सब जिनस देखा तब डायटेरी पैटर्न को ऐड करवा तो डायटेरी पैटर्न रे आमे देखिलु एतिकी लोक हमर एतिकी वुमेन्स हमर अछंती बीपी तांगर एतिक रहला ये तांगो एतिक रहला तो आमे गोटा ऑल टोटल गोटा डाइट प्लानिंग बनेबा जोटा कि कैलो प्रोटीन थिबो आ कैलोरीटा एक्स्ट्रा आमे तांको कैलोरी दबा को पड़े एक्स्ट्रा प्रोटीन तापरे फैट्स गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स कैल्शियम आयरन फॉलिक एसिड विटामिन B12 तो ये सब रिच रो आमे ताकू गोटे डाइट प्लानिंग बनै कि आमे तांको अवेयरनेस ये रे कहबा कि ए जिंस ए टाइमिंग रे खाइबा दरकार तो आउ फ्लूइड इनटेक टा को बढ़ाया को पड़िबो फ्लूइड इनटेक न होले बॉडी डिहाइड्रेट हेले तो माँ और छुआ पे रिस्क थाए तो सेति पय कि फ्लूइड इनटेक टा मध्य ठीक ठाक रहिबा दरकार तापरे आउ कोन सेत्र देखिबा ना ए सब जिंस को बेस करिकि तापरे हमें पुणी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज रे तांकर पुणी नेक्स्ट टाइम रे तांको भितर डिवाइड करबा को माने एनीमिक थिले को माने हाइपोटेंशन थिले को माने र कौन कौन इम्प्रूवमेंट देखा गला एतिक एनीमिक एतिक माने 20 जन भितर 5 जन एनीमिक थिले 5 जन समस्त सेम नथिबे ना समस्त एनीमिक रहउनांती तो 5 जन एनीमिक थिले तो ये भला डाइट इंटरवेंशन रे ए सब प्रिवेंटिव मेजर्स परे तो सेही 5 जन जाकर कौन हैला तो से तांकर ओडे ग्राफ हबो तो तापरे जने हाइपोटेंशन बा तांकर बीपी कम रहउतला आ जनकर लो वेट रहउतला 5 5 10 5 15 ताको डिवाइड करिकि वी शुड प्रिपेयर वन टेबल एंड फॉर्म वन graphical
मेजर तो ग्राफ रे एतिकी जण एनिमिक थिले गोटे करा हबो एतिकी जण एनिमिक थिले एतिकी एज ग्रुप आ एनिमिक तापरे आ नेक्स्ट येटा करिवे कोन ना लो वेट तापरे करिवे आ गोटे कोन ना लो वेट हाइपोटेंशन वाला के थिले जेतिकी ता भितर ग्रुप रू बाहरिबो सेतिकी डिवाइड करी सेतिकीटा ग्राफ रे आपण देखिबे कोटा माने एक्चुअली हमरो कंट्रोल रे रहला कि को माने गुड रिजल्ट्स माने सेन जोटा सेटा देखिबे लास्ट बेलू समरी रे लिखिले एतिकी परसेंट माने रिजल्ट्स इज गुड एतिकी परसेंट एवरेज एतिकी परसेंट ये लिखि देला परे लास्ट बेलू आपण बिबिलियोग्राफी रे बाहर करिवे तो एई भलिया करिया को पड़िबो आउ किछि अछि को पचारंतु मैम आ कोन नेक्स्ट क्लास हबो कि एटा तो थेसिस रो तो आउ किछि नाही टोटल हमें डिस्कशन सब कर देछु एटा लास्ट क्लास थिला तो आपण माने टाइट आपण मानकर जदी सब थ्योरी पेपर्स क्लियर हे जाई छी तेबे जाय कि आपण थेसिस पेपर को जिबे तो थेसिस रे आपण टाइटल चूज करंतु एरिया चूज करंतु क्वेश्चन प्रिपेयर करंतु तापरे आपण गाइड चूज करिकि गाइड रो ये रे गाइडेंस रे ही आपण जो जोटा जानि पनंदी तो से तांको गाइड रो भी हेल्प नै कि आपण ये करिवे किंतु टाइटल ता निजे चूज करंतु और टाइटल हला एई भितरे ही आपणकर सब टॉपिक रहिबो हला जोटा कि हमर वनरेबल ग्रुप रो पीपल रहउचंती तो जो मन को अवेयरनेस प्रोग्राम दरकार जो मन को हेल्थ एजुकेशन रो रिक्वायरमेंट अछि तो सेही मानन को ऊपर नै कि प्रोजेक्ट करंतु क्वेश्चन आउ एग्जाम सब केमती कोन हमें जानिबे एग्जाम केबे हबो आ क्वेश्चन पैटर्न उडा केमती जानिबो एग्जाम डेट आपन को मिली जिवो हला आपन को एग्जाम रो डेट इंफॉर्मेशन इग्नोर मिलिबो आ बाकी क्वेश्चन जो कहउचंती इग्नू स्टडी मटेरियल हला सबुठु बढ़िया स्टडी मटेरियल आ इजी टू अंडरस्टैंड माने एते सुंदर रे बुझी हबो आपण जहाँ जहाँ माने पढ़ा हला कि जहाँ हला थरोली ताको गोटे रीडिंग करंतु बारंबार पढ़ंतु ताको अंडरलाइन करंतु ता जिनसटा को बुझंतु बुझिला परे जाय कि आपण जदी पढ़िबे आ असाइनमेंट टाको देखंतु जो असाइनमेंट आपण ए ईयर रो सब करिसंती नो असाइनमेंट ओडा जो अछि तो से असाइनमेंट ओडा देखंतु प्लस बहिटा को थरोली पढ़ंतु सेति पे जो Excuse me. से ईयर रो असाइनमेंट दिया जाय लेखिकी हला लेखिले आपण गोटे कंप्लीट आइडिया आसीबो को टाइप रो क्वेश्चंस होउची आ को टाइप रो हमें प्रिपरेशन करिवु तो से अनुसार बुक को कान असाइनमेंट हेइ थाए टोटल बुक को नै कि ही हेइ थाए तो आपण को से असाइनमेंट कंप्लीट करिया कहले टोटल बुक को थरोली पढिले जाय कि असाइनमेंट को आपण अटेम्प्ट कर नै परिबे असाइनमेंट लिखिबारे तो असाइनमेंट लिखिले टोटल बही कंप्लीट हे जिवो माने से ईयर रो असाइनमेंट जो ईयर एग्जाम दोचंती से ईयर असाइनमेंट कंप्लीट कले बुक कंप्लीट होबो असाइनमेंट लिखिबा द्वारा सब जिंस मन रहिबो आ बारंबार पढ़ले सेटा एक्चुअली बहुत माने लैंग्वेज रा बहुत इजी टू माने अंडरस्टैंड माने पूरा बहुत सिंपल फॉर्म रे लिखाई थाए तो बहुत एग्जांपल लिखाई थाए आपण माने बुझिबे तारो मीनिंग लिखिबे विथ एग्जांपल्स देबे देले जाय कि माने आपण कोल बहिटा पढिले माने आपण एतरे माने जानि परिबे कि न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन ता कोन डेफिशिएंसी कोन एक्चुअली कोन होउची एटा पूरा पूरी जानि जे कोन तो बही कंप्लीट न करि जंती निजे सेल्फ स्टडी करंतु Excuse me, ma'am. मैम जो वॉल्यूम 1 और 2 अच्छे आ गोटे भी 3 भी अच्छे तो आमे फर्स्ट फेज रे कोन माने केमिति एग्जाम ता पैटर्न ता केमिति हबो जे वॉल्यूम 1 2 3 सब जो अच्छी ताको केमिति आमे एग्जाम दबो से विषय टिके कोंदो नहीं एग्जाम माने आपनकर तो शेड्यूल आसी जिवो हमर DNHE-1 कोद न थिबो 2 कोद न थिबो 3 कोद न थिबो आपन को शेड्यूल आज्ञा आसी जिवो फॉर्म फिल अप कले तो आपण से आज्ञा अनुसार 1 रो जति कि 6 टा बही अछि हला 2 रो सेमति 6 बुक्स अछि 3 रो 6 बुक्स अछि तो पार्ट बाय पार्ट अछि
तो जेतिकी बही अच्छी आपण पार्ट 1 जेतेबेले DNHE-1 रो जेते बही अच्छी आपण थरोली पढ़िबे डायटरी मैनेजमेंट कोन सब जिनस पढ़िला परे ताको नोट डाउन करिवे तो आपण आराम से बुझी परिबे तापरे आपणकर क्वेश्चन सेही बही भितर ही आसीबो तो बहीटा को मैम पढ़िले जाय कि हबो मैम हमको तो वॉल्यूम 1 रो दीटा बही आसीची वॉल्यूम 2 रो भी दीटा लेखा बही आसीची आपण 6 गोटे वॉल्यूम 1 रो 6टा बही अछि कि मैम वॉल्यूम 1 रो हां नहीं शुणु सेटा बहीर माने आमे आसी न पारले भी हमकू ई ज्ञान जोटा अछि हमर येटा वेबसाइट टा तो सेठी आज्ञा मध्य आपण पाई परिबे इग्नू संगे आज्ञा कांटेक्ट करके आपण पाई परिबे किछ असुविधा नहीं ऑनलाइन रे भी आपण अवेलेबल हे जिवो कारण जेहेतु आपण स्टूडेंट अछंती तो आज्ञा सेठी आज्ञा पढ़ी परिबे मैडम आरे सब पॉसिबल क्वेश्चन रे किछि बुक आसुची कि आपनकर तरफ रो किछि माने आमे वेबसाइट रो डाउनलोड कर परबो पॉसिबल क्वेश्चन किछिटा पॉसिबल क्वेश्चन नहीं आपण जो रेगुलर जो क्वेश्चन सब हमर प्रीवियस क्वेश्चन सडा अछि सेटा तो आसी आज्ञा जाउची हैला प्रीवियस क्वेश्चन जेंती 2020 रू 2023 जे जोटा अछि 1918 सब 5 इयर्स रो क्वेश्चन आसुची तो सेइठु आपण आज्ञा आज्ञा मैम प्रैक्टिस पाइबे हैला केमती हाँ आसुची हाँ कोन मैम टाइप रो आसुची तो वन टा कंपलसरी थाए बाकी तक माने शॉर्ट आंसर अटेंड करबा हेले होल बही पढिया को पड़िबो नहले शॉर्ट आंसर टा केमती आंसर देबे तो जदि बहीटा आज्ञा रीडिंग मैम बारंबार रीडिंग मारले आपन गोटे आइडिया आसीबो मु कोन गोटे लिखिबि आ बहीटा तो घोषिबेनी ना आपन गोटे माने गोटे आइडिया आसी गले कि न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट कोन विटामिन ए डेफिशिएंसी कोन प्रोफाइलिसिस प्रोग्राम रे हमकु केमती इम्यूनाइजेशन दबाकू पड़िबो केते दबाकू पड़िबो सेटा आपन पढिले ही आपन को मन रे रहिबो बार लिखिबे गोटे थरो तो हेइ जिवो प्रोजेक्ट वर्क कला बेले केमती कोन आमे आपनकर काउंसलिंग माने केमती कोन आपनकटू गाइडेंस नबु देखंतु आगे आपन थ्योरी टा सरीबो 1 2 3 तापरे सरला परे थ्योरी पेपर तीनटा को सरला परे तापरे प्रोजेक्ट टा जो देबे तो प्रोजेक्ट टा गाइड रो लिस्ट आपन को इग्नोर मिली जिवो हला बहुत गाइड अछंती तो मु भी गाइड अछि आ माने एक्सपर्ट गाइड भी अछंती तो आपण माने जोठी माने ये हेबे तो आपण से गाइड रो हेल्प रे आगे टाइटल चूज करिवे तांकू नै कि कथावार्ता हेबे हला परे तापरे केम स्टेप बाय स्टेप केमते करिवे से आपण को टिके हेल्प करले आपण सेटा को सेही ए जो स्टेप बडा मु कहली सेही स्टेप बाय जिबे जोडा गाइड रो हेल्प रे जिबे आ आपण आगे थ्योरी पेपर कंप्लीट करला परे थेसिस टा करिवे आ सब गोटे बही आपण टिके टिके गोटे दी पेज गोटे चैप्टर कवर करले आपनकर आराम से 6 मंथ्स भीतर पूरा कंप्लीट हे जिवो यदि गोटे चैप्टर कंप्लीट करछु गोटे चैप्टर रे जहा जहा माने आपनकर आसुची है तो सेही गोटे कंप्लीट करले भी हे जिवो आ बहुत सिंपल रे लिखा है सेटा बहुत सुंदर ही आपण ये कर परिबे मैडम जेतिके चैप्टर अछि कोन सब पढिया पड़िबो नहीं पढ़िले ही एक्चुअली आइडिया आसीबो ना ओ वन वर्ड आंसर जो आसीबो केम ए जानिबे हमर एबे जेतिकी क्लास हैला जेतिकी चैप्टर आ भी केते एक्स्ट्रा अछि ना नहीं आपण को तो डीएनएच रे 1 2 3 आ 4 टा हला थेसिस हला 1 रे हम कहली 6 टा बही 2 रे 6 टा आराम से जो से बहीड़ा कंप्लीट करी ही जिवो आपण गोटे चैप्टर गोटे डे नियंतु पढ़िबा पई धीरे धीरे पढ़िबा अंडरलाइन करिवे तबे आपण कंप्लीट ही जिवो बढ़िया रे हमको कोई बात नहीं कोन हला दुईटी सुबिलानी कोन कहउचंदी करा ଯିବ କରିବି କେବେ माने बही ନାଇଁ ବହି ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟା ଆମକୁ କିଏ ଦେବେ देखंतु असाइनमेंट हरिका जो आपणकर शेड्यूल बाहरिबो तो आपण टिके ये रे रखिबे नले आपण जो रजिस्ट्रेशन କରିथिबे ସେଇଠି ବି ଅପଡେଟ ଆସିବ ନହେଲେ ଇଗ୍ନୋରେ ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ବୁଝି ପାରିବେ କେବେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବମିଶନ ହବ କେବେ ଏକ୍ଜାମ ହବ ତ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ନା ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି ପେपर ତାପରେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ କି ନାଇଁ ଆगे ଆସାଇନमेंट देबे असाइनमेंट जदि आपण प्रिपेयर कर दउचंदी
तेबे आपण एग्जाम देला बेलू आपन सुविधा हबो कारण असाइनमेंट होल बही रु टोटल से जो माने DNHE-1 रु असाइनमेंट सबू 6टा बही को नेकी असाइनमेंट हुए तो सेति पे असाइनमेंट जदि लेखिकी तापर एग्जाम देबे तेबे आपन इजी हबो कवर हो जाइथिबो बही जो ईयर रो असाइनमेंट देबे से ईयर रो एग्जाम देबे आगे असाइनमेंट डिपॉजिट करिवे तापर एग्जाम देबे એટલે પ્રોબેબલી કેબે કરા જાય મેડમ અસાઇનમેન્ટ ટા असाइनमेंट ता आपन को ईयर रो स्टूडेंट तो आपन टिके इग्नोर रे कांटेक्ट करिवे है ना ऑफिस रे कांटेक्ट करले से कहि देबे आपन को ईयर रो ये कि आपनकर जदि टाइम हेथिबो मैम आमे 23 रे एडमिशन करथिलु नवंबर रे 23 जुलाई नवंबर रे जुलाई एडमिशन जुलाई रे आगे ଅଗଷ୍ଟ हां ताहले से एटा 1 नहीं ईयर नहीं अगस्त लास्ट को हेतिला मैडम ଅଗଷ୍ଟ जुलाई सेशन रे देइसी आज्ञा आज्ञा 2000 जुलाई हाँ जुलाई रे नेक्स्ट जुलाई सेशन रे देबे बोधे आपन टिके इग्नोर रे पछारे देबे અસાઇનમેન્ટ ટા હેન્ડ રિટન હબો મેડમ असाइनमेंट भी सही टाइम रे एग्जाम पूर्व ही देबे तार મેડમ एग्जाम લેખિବାକୁ પଡିବ ନା ટાઈપ କଲେ ହବ અસાઇનમેન્ટ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲେଖିବେ ଟାଇପ ରେ ହବନି ଆପଣ ଲେଖିବେ ପୁରା ହେଲା ଲେଖିକି ଦେବେ ଟାଇପ ରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଯିବନି मैम किछि बुझिबार थिले आपनक सहित टिके कांटेक्ट कर परु हमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप हेछि आपण डाउट्स नंबर रहिला टा टिके शेयर करंतु मैम प्लीज हां ठीक है 720 ओके मैम 720 533 533 533 1094 मैम आउथरे कहंतु टिके 720 आज्ञा 533 आज्ञा 1094 थैंक यू मैम है ना किछि डाउट्स आसिले किंतु पढंतु थरोली बही पढंतु तापरे आपण डाउट जा भारले पचार परिबे मैडम ଏବେ କଣ ବହି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି କି ତିନିଟା ବହି ଏକା ଆସିଲା ଭଲ୍ୟୁମ 1 ଭଲ୍ୟୁମ 2 ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ भल नहीं नहीं ଆସିଛି ଛଅଟା ତ ଫିନିଶ नेक्स्ट आसी ଆଜ୍ଞା हाँ ये थ्रीटा आसी नहीं आसी 3टा आसी तो DNH 1 2 3 अछि तीनटा ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ଦିଟା ଆସିଛି ଗୋଟେ ପତଳା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ବୋଲି ଅଛି चेंज हो जाइछि आ सब सेतरे रहिछि आ नहीं आपन डीएनएसी रो पेपर 1 टा आसी आ पेपर 4 टा आसी असाइनमेंट पेपर 2 और पेपर 3 आसी नहीं बहुत पिलांगर आसी नहीं हमर भी आसी नहीं आसु और 4 दिन भीतर पहुंचियो अच्छा अच्छा तेबे आसी जिवो पेपर 1 2 टा को आपण पढी की थरो ही जानतु तापरे 3 टा आसी जिवो ते कांटेक्ट रे थांदु असाइनमेंट कौन समस्त समान ना अलग अलग आस नहीं 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 गोटे जो सेशन रे जोटा आसीबो असाइनमेंट सेम आसीबो आपणकर जो जुलाई सेशन रे एडमिशन नै चंदी ते जो असाइनमेंट ता समस्त सेम आसीबो आपण लिखिबे आ जेबे भी एग्जाम देबे ता पूर्व असाइनमेंट ता देले भलो एटा कॉपी पेस्ट होनी तो अलग अलग असाइनमेंट समस्त समान तो नथा ना फिजिकली लेके दबाक पड़िबो से डिपॉजिट करिया पड़िबो कि हां डिपॉजिट आपणक स्टडी सेंटर रे डिपॉजिट करिवे नहले बुझी देबे ऑनलाइन ऑफलाइन एटा बोथ अछि बदे सेठी बुझी कि आपण ऑफलाइन हेले निज स्टडी सेंटर जोठी करथिबे सेठी देबे आ ऑनलाइन हेले आपण बुझी देबे इग्नोर रे थैंक यू मैम ठीक अछि आउ किछि अछि डाउट नहीं मैम वो जहाँ डाउट ऐसे वो हमें अपन कम्युनिकेट हाँ, करियो भाई ठीक फोन ठीक अछि थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू Thank you. Thank you, madam.